तुझे हो क्या आगे का कुछ सोचा है? ऐसे नहीं चलेगा अक्षर। तुझे हो क्या रहा है? ऐसे सोने से कुछ ठीक नहीं होगा। सोने से कुछ नहीं होगा अक्षर। जा भाई, ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। तू अपने गलत जा रहा है, कुछ ठीक नहीं होने वाला। सही नहीं तक सोता रहेगा। ऐसे सोने से कुछ नहीं होगा अक्षर। तू गलत जा रहा है अक्षर। तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? आगे कुछ सोचा है कि नहीं सोचा? सोचा क्या कर रहा है? तुझे हो क्या रहा है कि नहीं? क्या कर रहा है? एक ऐसा साल जिसने हम सबसे काफ़ी कुछ छीन लिया। उस साल ने मुझे एक ऐसे फेज में डाल दिया जिससे निकलना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम साइकिलिंग केम एज अ रे ऑफ होप फॉर मी। Today I'm cycling in my city. Peak summers. So peak summer में मैं दिल्ली की peak summer में जब cycling करता था, I was like, why not try in my own city? Weather has been great. God has been kind actually. सुबह sunny था. Now it's been sun आ रहा है. It's one of the most favorite places in my city to come cycling. It's kind of hidden and it's kind of tucked away from the city. It's kind of tucked away from the hustle bustle of city. It's one of the most favorite places of mine for cycling in my city, and it's kind of away from the shore. It's beautiful. जब मैं साइकिलिंग पे जाता था, साइकिल मुझे रिमाइंडर देती थी, भले ही ये फेस डिफिकल्ट है, बट श्योरली देयर इज गुडनेस आउट देयर। That's the beauty of my village. Whole my life, cycling has been a part of me sometime. Like it was class 9 जब मैं cycling करता था. Then life like happened and फिर cycling बंद कर दिया एकदम. Like 9th class में मेरे पास ठीक साइकिल थी. तो फिर वो मैंने सिर्फ कोचिंग जाने के लिए यूज की साइकिल ब्रीफ टाइम के लिए, and then I stopped cycling. लॉकडाउन में साइकिलिंग का मेरा इंटरेस्ट वापस आया. It was lockdown that changed my fascination for cycling, and मैंने साइकिलिंग करना चालू कर दिया. And उसके बाद I never stopped. Actually, it was lockdown when I was on a phase that, you know, it was only cycling that helped me come back from that phase. भले ही साइकिलिंग सब कुछ फिक्स नहीं कर सकती थी, बट उसने मुझे उससे भी बेटर कुछ दिया, द एबिलिटी टू फाइंड हैप्पीनेस इन द मिडल ऑफ टफ टाइम्स। तो यहाँ पे मैं साइकिल कर रहा था and I just saw हमारे पीछे यहाँ पे एक डेड काऊ पड़ी हुई है, like just there. It's very weird because इतने सुनसान एरिया में अगर ऐसे कोई एनिमल मरता है, तो it's probably from an accident. अगर रोड पे कोई मरता है तो it's probably from an accident, but यहाँ पे रोड पे नहीं है. Actually काऊ एकदम साइड में पड़ी हुई है. एक लोकलाइट ने बताया जो काऊ की डेथ है is probably from a polythene. हम polythene ऐसे यूज करते हैं and then we throw polythenes like that. पहली बात तो polythene बैन हो रही है वर्ल्ड में, it's very great. But then now हम अगर यूज कर रहे हैं तो we should not throw it like that. It's costing lives like that. हम देख रहे थे उस इंसिडेंट स्पॉट पर धीरे धीरे काफ़ी गाय आने लग रही थी। इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी इवन इन 2024 वी ह्यूमंस कांट कोएग्जिस्ट विद एनिमल्स। Like a little kid smiles seeing his toy car, that's what cycling does to me. Like a warm hug, that's what cycling does to me. To not sound really cliche, it surely makes my day a little better each time I paddle. Meet my friends, Mahi and Nitya. So 2 साल बाद मिल रहा हूँ इनसे. साइकिलिंग मेरा सिर्फ एस्केप नहीं था, it became my special place, my happy spot. Every single time I went for a ride, I found new things to love, made new friends,
and had experiences that I will cherish for the rest of my life. What do I tell you about cycling? मतलब cycling is something आप किसी भी point पे करो. You're not feeling well, go for cycling. You're not feeling happy, go for cycling. You had a bad day, go for cycling. मतलब cycling has numerous health benefits. It also helps your mental health. You know, it makes you instantly happy. And I think इससे क्या मतलब I think it's the best form of cardio. आप gym में cardio करते हो. It's understood. Gym में you do multiple things, but I think for cardio, there's nothing better than cycling. I would skip clubbing and I would go for cycling. I would skip movies and I would still choose cycling. I would skip fancy cafes and I would choose cycling. Just fresh air. I love to call this my city. And it's best feeling fresh air and farms. That's something मैं cities में miss करता हूँ. Cities में ऐसे farms and fresh air नहीं होता. आप highway में cycling करते हो. Like हम 100 kilometers, 150 kilometers की stretch की cycling करते हैं, but all on highways. No, in such pure farm places and fresh air. And यहाँ पे I can cycle, I can hike up to that hill, and so यहाँ पे it's complete adventure. Every morning feels like an adventure in these farms. And here I am, after riding hundreds of kilometers, still paddling, still chasing sunsets, still chasing that feeling of freedom. Every time I push those pedals, it's like getting a step closer to feeling truly free. Like it's just me and that road, and nothing else matters. Because when you are out there, it's not just about how far you go or how fast you get there. It's about enjoying that ride, the ups and downs, the challenges you face, the happy moments you find along the way. It's about feeling good. It's about feeling alive and sharing smiles with those you meet on your journey. Even if I forget that phase, मुझे ये हमेशा याद रहेगा, cycling really picked me up from that phase.